जब आप खोलेंगे तो उसमें दो चीजें हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बता दीजिए कि चलिए पहले वालों को जरा ग्रे एरिया, दूसरे वाले में तो बता सकते हैं ना फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट अच्छा कानून बनाए, बुरा कानून बनाए, ये हम पार्लियामेंट्री डिबेट इधर नहीं करेंगे। आप 184(3) में हो सकता है कल को हाई कोर्ट में आप ये पिटिशन लगाते, वो अलाउ कर देते आपकी पिटिशन, फिर आप हमारे पास एपेलेट जुरिसडिक्शन में आते, हमारे पास बहुत खुले होते। अब आपने बहुत नैरो इंतखाब किया है, 184(3) का इंतखाब किया है। My Lord, there are number of judgments of the Supreme Court. जजमेंट्स हावी नहीं होते हैं आइन पे। अच्छा, 189 पढ़ लें जरा, ये आप लोगों के जरा गलत फहमी क्यों है? 189, एक सेकंड, 189 पढ़ लेते हैं साथ में, जरा पढ़िए 189। जी, any decision of the Supreme Court shall, to the extent that it decides the question of law or is based upon or enunciates a principal law, be binding on all other courts in Pakistan. लफ्ज है all other courts, not the Supreme Court. Yes. तो ये हमें हमारे ऊपर हमारे प्रेसिडेंट्स ना साइड कीजिए। अब आपसे आईनी सवाल पूछा जा रहा है, on all other courts, which means high courts and unless your lordship allows me to make a submission. अदर कोर्ट की बात कर रहा हूँ। No, I will not be able. ठीक है, आपको सवाल दे दिया, आप जवाब दीजिए जैसे भी आप करना चाहें। Please, Lordship. जी, sir. Mr. Siddiqui, if I may ask you a question. Please, Lordship. It seems to me that Article 189 deals with what is called vertical stare decisis. But there is also within the Supreme Court and in each High Court what is called horizontal stare decisis, the law of precedent. That is a judge-made law, that is case law. That is not provided in the Constitution. And surely the rules, are there not rules that regulate horizontal stare decisis? For example, the full court gives a judgment. If there were no horizontal stare decisis, a two-member bench of the Supreme Court would say, well, Article 189 doesn't apply, so we are not bound by the judgment of the full court. Would that be correct? Would that be a correct understanding? That would be a fallacy. It will not be correct. So if a three-member bench, a five-member bench gives a judgment, can a three-member bench say, or even a five-member bench say, sorry, we are not bound because Article 189 doesn't apply to us? Surely horizontal stare decisis does apply. It's a well-settled. What would you say to that? But I would make a humble submission that the judgments of the superior courts, particularly of the Supreme Court, are a binding precedent on the subsequent courts constituted as a benches or a full court, and unless your lordship, in your lordship's wisdom, decide to overrule them, they have a binding value, and it goes to the very system of certainty within the judicial system. And to say that your lordship are not bound by the previous judgment would, with respect. मेरे ख्याल में आप मेरा सवाल सर समझिए नहीं सही। मैं आपको आ रही हूँ सर, मैं उधर आ रहा हूँ। नहीं, आ नहीं, मेरा सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ, शायद आप समझ नहीं पाए। यकीनन 5 मेंबर बेंच का जजमेंट 3 मेंबर बेंच पे बाइंडिंग है, यकीनन। अब हम आर्टिकल 189 की बुनियादी बात कर रहे हैं, अदर कोर्ट्स। अगर ये बात है तो ये अब फुल कोर्ट, इससे बड़ी तो फुल कोर्ट नहीं हो सकती है ना। हमारे ऊपर कोई प्रेसिडेंट लागू नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। अगर यही इशू किसी लार्जर बेंच ने फैसला कर लिया होता वो हम पे होगा, मगर एज अ रूल, अदरवाइज जजेस डिसेंट भी नहीं कर सकेंगे ना, वो तो बाइंडिंग है, डिसेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो अब आप जरा वजाहत में ये कर रहा हूँ, ये नहीं है कि 4 मेंबर बेंच डिसरिगार्ड, 2 मेंबर बेंच डिसरिगार्ड कर देगा 5 मेंबर बेंच के फैसलों को। बिल्कुल, ये मेरी, आप इसका मतलब वो बात समझ नहीं पाए, अदर कोर्ट्स। मगर अभी तो वो मफरूजों में हम नहीं जाना चाहते हैं, ये जो मौका है इस पे पूरा कोर्ट बैठा है, तो ये कोई प्रेसिडेंट जब आप साइड करने निकलेंगे तो वो प्रिंसिपल नहीं अप्लाई करेगा जब तक आप आर्टिकल 184(3) का दरवाजा नहीं खोल पाए। Mr. Siddiqui, His Lordship, Article 4. Mr. Siddiqui, Article 4. Please, Lordship, I have another question. Please explain whether any person of a society could lead a respectable life where the courts are not allowed to function independently? No. Is it not a violation of fundamental rights? Yes, and that has been held by your lordships. It is not it is judgments of your lordship of 10 judges, 14 judges.
And I just will never. सवाल तो हमारे सामने ये कि ये जो कानून है ये तो और ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं हमारे सिस्टम Sir, को that- और आम आदमी की जिंदगी आसान सर कर रहे हैं। देखिए मैं एक आपको मैं और वजाहत कर दूं, हम बहुत जजमेंट ओरिएंटेड बन गए। मैंने जो हल्फ उठाया है ना, मैंने ये हल्फ नहीं उठाया, सर सुन तो लीजिए ना प्लीज, Sir, कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का पाबंद हूं। आप इससे मुखातिब हो जाए ना I'm with you. कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ताबे हूं। मैंने हल्फ उठाया, मैं आइन और कानून के ताबे हूं। प्लीज मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी जजमेंट को, आइन को तो छोड़ दीजिए, आइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, जजमेंट पढ़ेंगे बैठकर। मैं तो कह जरा नहीं। आप जरा सुन लीजिए ना, इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं, मैं उन जजमेंट के ताबे नहीं हूं। आप सुन लीजिए वजाहत से, हो सकता है कोई और हो, मैं नहीं हूं, ठीक है। आप 100 जजमेंट मुझे प्लेस करें, मैं एक भी नहीं पढ़ूंगा। मैं कहूंगा आइन पढ़िए, अगर आइन के वो इन अकॉर्डेंस विथ है, यहाँ तो ये चीजें ना करें। रिमेंबर द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हम लोग बैठ के इधर लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, 57,000 केसेस एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो अगर एक बेहतरी पार्लियामेंट समझती है, एक बेहतरी लाई है, आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट पे। वो ख्वाजा साहब चले गए, उन्होंने एक फंडामेंटल राइट का तस्करा नहीं किया। आपसे हम पूछ रहे हैं कि 184(3) पे आ जाइए, फिर 191 पे आ जाइए, फिर आर्ग्यूमेंट्स करिए। बहुत बुरा कानून है, मगर उसके दायरे में लाइए। I proceed. जी प्लीज। Article 4. I read, my lord. फरमाइए। To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person of the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to life, liberty, body, reputation, or property of any person shall be taken except in accordance with law. B. No person shall be prevented from or hindered in doing which is not prohibited by law. And C. No person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. Now let us go on to the. Not go on to do, develop an argument. Well, allow me. No, why have you read Article 4? Your Lordship had asked me to argue the case according to the way that I want to proceed. Yes, so please allow me. What is the violation of Article 4? What is the violation of Article 4? My Lord, It is mentioned in the preamble of the Act. I am making a submission to your Lordships. क्या साहब जरा प्लीज एक चीज क्लियर कर दें, आप मानते हैं कि ये बेहतरीन कानून यही होना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था। बिल्कुल 191 में यही प्रोपोजिशन, यही प्रोपोजिशन। अब इसको जिस तरह माय लॉर्ड कह रहे हैं एक्सप्लेन कर दें। 191 पढ़ ले, उसमें अगर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है और सुप्रीम कोर्ट में है, शेल नहीं है, इट इज नॉट द राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इतना बता दें कि जो सब्जेक्ट लॉ है, क्या वो रूल्स, उनका स्टेटस उस पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से हायर है या लोअर है? दैट्स द ओनली। थैंक यू माय लॉर्ड, आई एम इंडेटेड टू माय लॉर्ड। दिस इज द प्रोपोजिशन। एक आर्टिकल 4 आप कह रहे हैं, दूसरा कौन सा आर्टिकल है वो पढ़ लीजिए ना, सारे आर्टिकल इसके ऊपर आ जाए ना फिर आप। आर्टिकल 10A, आर्टिकल 10 पढ़िए। आर्टिकल 10, सॉरी माय लॉर्ड, 9. ऐसे नहीं नंबर्स ना दें, बताएं ना। No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. आपकी कौन सी लाइफ लिबर्टी ले ली इस लॉ ने? सर हमारे चीफ जस्टिस की पावर्स क्लिप कर रहे हैं। तो मैं जानूं और और यही पार्लियामेंट जाने, आपका क्या ताल्लुक है इससे? No, sir, that is my perception. If your lordship may be inclined to, I'm going to persuade your lordship this is not a constitutional. तो बहुत ही नॉवल आपने आर्गुमेंट वैसे है। बड़ा जबरदस्त बहस की कि हमारे चीफ जस्टिस की पावर ले रहे हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और आर्टिकल 9 इफेक्ट हो गया है। Yes, the deviation is that a procedure other than the rules of the वैसे मैं Supreme Court. वजाहत करना चाहता हूँ, मैंने आपको अपना वकील नहीं किया था। No, शुक्रिया। लोग ये ना समझ बैठे कि आप मेरी वकालत कर रहे Lord, I have to assist you the way the law in this country is हैं। चले developed. चलते हैं आगे ना। देखिए साहब, एक चीफ जस्टिस आपके नहीं है, इस कौम के हैं और कौम के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं। Yes. उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को ऐसे होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे होना चाहिए।
आपने वो बताया आइन को भी देख लेना पहले, आइन तो कहते आइन के देखे बगैर। आइन तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट करेगा सब कुछ। सर, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आप तो कहते हैं चीफ जस्टिस। नो नो, आई से आप अभी तक ये डिफरेंस नहीं क्लियर नो, आई एम, अभी आप अलाउ करेंगे प्रोसीड करने तो करो। ये सब इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स ना बड़े कौन सी एक फोर हो गया, कौन सी इन्फोर्समेंट करना 9 के बाद नो 10 10 में क्या है ये? 10 में कौन सा है? नो, ये तो no अरेस्ट person who is arrested shall be detained इससे क्या ताल्लुक है इस बात से हमारी? सर मुझे आप प्लीज नहीं, ये नहीं आपके, मैं सुबह से सिख 1 से सिख 260 तक Lord, पढ़ूंगा नहीं, सॉरी, ये जो हमारा टाइम है ना, इस पब्लिक मनी, ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे मैं जो मर्जी आर्ग्यू करूं, आप उसकी हमें रेलेवेंस, सॉरी ऐसे नहीं आर्ग्यूमेंट्स होंगे। क्या साहब, जब आप मान गए हैं कि ये बेहतरीन कानून है, चीफ जस्टिस के इख्तियार जो कुली थे वो नहीं होने चाहिए थे, देवर, उनका इस्तेमाल सही नहीं हुआ, अब उसके बियॉन्ड आप जाए, आप सिर्फ अब ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था, वो बता दीजिएगा। मैं नहीं मान रहा कि ये बहुत अच्छा कानून है, मैं क्या ये इसका ख्याल बहुत अच्छा होगा। आप चाहते लेकिन ये हैं कानून आप चाहते हैं कि चीफ जस्टिस के पास कुली इख्तियार हो। मैं नहीं चाहता, आपने दिया रूल्स के अंदर। नहीं, ओहो, आप उसको छोड़ दीजिएगा ना, हमने क्यों छोड़ दी सर? आपने रूल क्या आपके नजदीक एक शख्स के पास अनफेटेड, अनब्रिडल्ड, अनअकाउंटेबल, अनट्रेमल्ड पावर होनी चाहिए? यहाँ पे द पावर हैज बीन गिवन टू द चीफ जस्टिस एंड टू सीनियर मोस्ट जजेस। बहुत अच्छी बात है सर जो आप कर रहे हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस साहब को बहुत पावर दे रहा है। लेट अस हैव अ लुक एट आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 तो देख लीजिए सर। एक सेकंड जरा इसका फॉर्मेट ठीक कर लेते हैं बहस का। सिर्फ हमें पहला सवाल हम पूछ रहे हैं कि 184 में आने से पहले फंडामेंटल राइट्स वाजे कर दें, कौन सा वायलेट हो? लॉर्ड, योर लॉर्डशिप held that when a law is made or election is taken which violates the constitutional scheme, it is a violation of fundamental right. तो स्कीम में कौन सी प्रोविजन बताएं ना सर मैं आपको, आप मुझे अलाउ करेंगे? आपको दे रहे हैं इजाजत, बताइए। The law, the constitution requires, under the constitution, and I will read the relevant article to some breather by your lordships, that in the context of the trichotomy of powers, the parliament will make its own rules, the executive will make its own rules, the Supreme Court will make its own rules for functioning, and those rules have a constitutional force and they are of a higher pedestal than the ordinary law. This has आपने, हमने जो आपसे शुरू किया था हकूक की बात, अब वो आपने तर्क कर दी। आप मैं तो आपको जवाब दे रहा हूं। नहीं, जवाब ना दीजिए प्लीज, आप आर्ग्यू कीजिए, हम आपकी आसानी पैदा कर रहे हैं, बाद में जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, आप देखिए मैं भी वकील रह चुका हूँ, जब 6-7 सवाल आते हैं बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब आपने पहले जवाब दे दिया था, बिल्कुल कानून सही है। अगर जब माय लॉर्ड ने सवाल दोबारा पूछा, अब आपने ठहर जाइए ना, जैसे विटनेस कहते हैं ना, अगेन सेज, जिसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सुन लीजिए, आर्ग्यू आप कीजिए, आपका केस है, मगर बताएं बुनियादी हकूक कौन सा सलब हो गया, ये बता दें बस। 183 अगर आप ये अगर को एप्लीकेबल करने के लिए पहले हमें बता दें कि कौन से फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करना चाहते हैं जो इन्फ्रिंज हुए हैं। पहले इस पे आइए, ताकि वाई नॉट 199, यही पावर हाई कोर्ट के पास है, वहां क्यों नहीं गए? सर मैं आपको नोट, आप, I am asking your lordship to recognize my fundamental right given in Article 9, 10, 10A. सर मैंने पढ़ा आपके सामने। चलिए बस यही आर्गुमेंट है जी, आपका। सर मैं पढ़ रहा हूँ आगे। नहीं, आप बता ही नहीं रहे, कोई प्रोपोजिशन ही नहीं डेवलप कर रहे हैं आप। My proposition, मुझे आप, my proposition is that the legislature is bound by the scheme of the constitution, and the constitution requires that the constitution. हमने फैसला किया आपसे सवाल नहीं करेंगे। The constitution requires that the legislature will make its own rules. The constitution requires petition, ये आपने अभी बात की, मैंने नोट कर लिया। 3 different organs of the state हैं, they will function independent of one another.
one will not make encroachment on the other. तो यहाँ तक पहुँचने में हमने बुनियादी बातें तो पता है ना, आगे बढ़िए ना। It is my fundamental right to ensure and protect that this constitutional encroachment is not made by the parliament. ठीक, समझ गए। अगला पॉइंट। And there are judgments on the issue which says that these are issues of fundamental violation of fundamental right, deviation from the constitution, and if it affects a large community of people, then it is a question of public importance. और जजमेंट है आप नोट कर लें, मैं सर जजमेंट पढ़ने में चाहूंगा, दिस सो फंडामेंटल क्वेश्चन, ये देयर आर न्यूमरस जजमेंट्स। ये इस बात का तयन करना जी आपके पास इख्तियार है, जैसे मंसूर शाह साहब ने जिक्र किया कि ये इख्तियार एक्सप्रेस होता है, या तो हम रेफरेंडम करा लें जहाँ हर मार्शल और डिक्टेटर को 98.6% वोट हमेशा मिलते हैं। अच्छा, 90 सुन लीजिए ना जरा, प्लीज तसल्ली रख लें। जी सर, नहीं सुन रहा। या हमें क्या पता लोगों को क्या चाहिए, उसकी अक्कासी उनके नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे करते हैं, ठीक है, जिसको इलेक्ट करें उनकी मर्जी है, वो उसकी अक्कासी करते हैं। हम यहाँ तो कोई पोल अगर हम इधर खड़ कर मैं पूछ लूँ सबसे कौन से इन फेवर ऑफ दिस लॉ है, आपको कौन हक देता है ये करने का? आपको ये देता है कि फंडामेंटल एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें, आप वो बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने बस 8, 9, 10 बस कोई आर्गुमेंट डेवलप कीजिए। हजूर ऐसे नहीं हुआ आर्गुमेंट।